all participants. We will keep getting participants over time. We can start sharp at 11. Respect all those who are here in time. Hello, everybody. Good morning. A very warm welcome to today's session on the second session, actually, under the series on drafting and pleading. My name is Madhura. I represent Indian Lawyers Association at the national level. ILA is a pan-India platform which helps all the legal professionals to come together, learn from each other, network, grow, build a network that can drive India's legal system and its functions. To make this objective a success, we actually work on a basis of having chapters, local chapters in different cities all over India. Currently, we have about 70 plus chapters in all major cities of the country, and these chapters undertake different events, activities, initiatives that help shape ILA in their city. So it essentially helps to bring a lot of local flavor, bring a well close-knit network, and undertake ILA vision and mission. So end of this session or latest by today evening, I'll be very happy to invite all of you to join ILA in your respective cities. If you're already a part of a city where we have a chapter, we'd be very happy to welcome you to join that chapter. We can form a new chapter with you. So today's session, this session series is actually brought to us by ILA Rajasthan chapters. So the chapters are Jaipur. We have Dr. Rajesh Bedi, President of ILA Jaipur. We have Advocate Vaibhav Parekh from ILA Ajmer. We have Advocate Sonal Vijayvargiya from Kota, and then we also have Advocate Bilal Rai Vyas from which city, sir? Bhilwara. Yes, right. So all the participants, welcome once again. All your questions will be put forward in the chat. The team Rajasthan will be here with us today. They'll help us through the session. And for the speaker, welcome, speaker introduction, and for the next session, and I'll hand it over to Dr. Meet. Sir, Thank you, Madhura, for such a wonderful introduction of ILA. आप सबका स्वागत है इस सीरीज में जो समर्पित है drafting of pleading. Actually, 2 years back we made a research about that when people are facing the problem to draft or to put the pleading in a perfect form, how they can develop their pleading in a systematic manner. During our academia, we are not able to get all the things. So owing to our Rajasthan teams pondering on that one, and we have started this one series from the last month. But every lecture will be just like a new for each and everyone. We will put all the basics of that one. ILA Rajasthan में अभी फिलहाल 4 चैप्टर हैं. हम अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और जयपुर चारों चैप्टर मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को साथ में आयोजित कर रहे हैं. इस प्रोग्राम या ILA का जो पूरा मैंडेट है, ILA का मैंडेट ये है कि मेंटरिंग, लर्निंग, लीडरशिप एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है. यदि बाकी लोग भी अपना वीडियो चला लेंगे तो हमें ठीक लगेगा, जो लोग चला सकते हैं. पहले सीरीज में हमने पूरे इंडिया को कवर अप किया, उस पे बेसिक्स पर हमने बातचीत की. आज भी डॉक्टर झा हैं, AOR है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे अपने अनुभव को. साथ ही साथ ये पूरी सीरीज 12 लेक्चर की सीरीज है. बीच बीच में हमारी टीम जब डिसाइड करेगी तो हम वर्कशॉप मेथोडोलॉजी पर भी काम करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे. इस अभी ILA राजस्थान 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, 2 है वैसे, लेकिन वो 3 बार इवेंट होती है. हर महीने के चौथे शनिवार को 11 से 12 हमारा ये प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग पर ये सीरीज रहेगी. बीच बीच में इसमें लगेगा और हमारी टीम डिसाइड करेगी तो वर्कशॉप पर हम बातचीत करेंगे. 1st of the month and 15th of the each month we organize one program, Decode Yourself, in which we discuss about the judgment. हम निर्णय के बारे में चर्चा करते हैं. निर्णय में ऑबिटो डिक्टा और रेशो डिसेंडाई क्या हो सकता है, निर्णय या डिसीजन से हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप एकेडमिया में हैं तो कैसे आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, उसको लेकर बातचीत करते हैं. 20 मिनट लगभग एक डिसीजन पर हमारी चर्चा होती है. केशवानंद भारती ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हमने पिछले महीने में चर्चा की.
साथ ही साथ कोई एक्ट लेते हैं या कोई क्वेश्चन ऑफ उसको क्या कहें, क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पर चर्चा होनी है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज द पर्पसेस ऑफ दिस वन रिकॉर्ड योर सेल्फ एक्टिविटी। ये आपको 1 और 15 ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग की सीरीज का उद्देश्य ये है कि हाउ वी कैन एम्पावर आवर सेल्फ मतलब मैं जब डॉक्टर झा को सुनूंगा तो मैं मेरे आप को भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ देखूंगा, मैं कुछ नया सीखूंगा, नया जानूंगा। और बीइंग ए फ्रॉम ए फैटर्निटी ऑफ एडवोकेसी या लॉ, वी हैव टू बी अपडेट एंड अपग्रेड आवरसेल्फ ईच एंड एवरी वन टाइम। तो वो है। साथ ही साथ जो 1 और 15 का है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि वहां हम ही बोलेंगे, आपको लगता है कि अगले बार 6 मिनट जजमेंट पर आप बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ मधुरा ने जैसे बताया कि यू कैन बी ए पार्ट ऑफ ILA in Rajasthan also. You can start a chapter your own, either you can be associated with ILA Rajasthan team and हमारे एक दूसरे पार्टनर है इंडिक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ लॉ पर काम करते हैं, वो भी कुछ एक्टिविटीज काम करते हैं। तो ILA और दोनों मिलकर अब साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने आपके सामने बात रखी है। अभी कुछ बातें और आपके सामने आएगी। यदि आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर होना चाह रहे हैं या हमें बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम भी जिंदगी में लगातार सीखने के प्रोसेस में, वी आर ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग ईच एंड एवरी वन टाइम। Those who are able to switch on their videos, it would be better. We will exchange the more energy with each other. मेरे साथी यंग एनर्जेटिक हमारे ILA अजमेर के प्रेसिडेंट वैभव पारिक हैं। I would like to invite to him to introduce our eminent speaker of today. मेरा उनसे निवेदन रहेगा आप यदि भाषा को बाइलिंगुअल रखें तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी जितनी आपको लगे उचित उतनी आपको छूट है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रेसिडेंट ऑफ ILA अजमेर एडवोकेट वैभव पारिक। ही इज अ डायनेमिक फेलो हिमसेल्फ। आप जब सुनेंगे तो पता चल जाएगा। ओवर टू एडवोकेट वैभव पारिक। थैंक यू सो मच सर। सर आ रही आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज कौन रोक सकता है दोस्त? हाँ नहीं थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am, for coming to the board and giving us so much to add to this program. Hello, everyone. Introducing our esteemed speaker, an accomplished attorney in the Supreme Court of India, with extensive experience in environmental law, service matter, family dispute, and cyber law. Her expertise is unparalleled. She holds a PhD in international relations, and she has authored a book in the field as an editor-in-chief and editor of 2 renowned legal magazines. She has published numerous articles on significant legal topics. Our speaker is also a distinguished national ambassador for the International Academy of Space Law and has been recognized for her outstanding commitment to humanitarian service during the COVID-19 pandemic. Additionally, she serves as the state president for Delhi in the Women Indian Chambers of Commerce and Industry. With an impressive track record of speaking engagement at the prestigious institutions and conferences, our speaker has shared her insight on topics such as corporate jurisprudence, women empowerment, climate change, and criminal justice system. She has been felicitated with the awards like the Great Warriors of Humanity, International Women Excellence, and Iconic Women Creating a Better World. It is an honor to welcome this accomplished legal professional as our keynote speaker today. So proud of you, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you so much for this wonderful introduction. Though I don't agree with all that you have said because I'm just a learning professional still. And as Rajiv Veti sir was saying, that we keep learning throughout our life. I totally agree with him. And we don't know what exchanges we do, what transactions occur between us. We learn while meeting and speaking to each other. And such is our profession. So, and I'm grateful for being invited here on the platform. This is my 3rd time with Indian Lawyers Association. Like I was invited long back for Article 39A, Directive Principles of State Policy. Then I was again invited for data protection and right to privacy. And it's been quite a good experience with ILA. And this is the 3rd time. So I'm really happy, grateful, and honored to be here. And
So should I like dive into the topic right away? Should I start? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. Yes. So today's topic is related to drafting, and since I have been in a Supreme Court most of the time, and I have seen what drafting holds for the lawyers. Drafting is actually uh, not only an ability to express one thought process in writing, though it is the most important thing for a lawyer, especially if he is going for a litigation as a career, because in legal profession and as a litigating advocate, it is very difficult to excel without having a drafting skill with yourself. You cannot do anything substantial. Like even if you can argue very well, you should know what drafting means, what is the right way of drafting, what the draft holds inside it. You have to read the draft. For understanding the draft, you have to understand drafting first, and then only you can argue on such topics. Also, drafting is one of the important paper for advocate on record examination, and considered as one of the toughest papers of that examination. But the core idea is to uh, understand how far you have understood drafting. If they don't actually want to know that do you know the definition of drafting or not, purpose of drafting or not, though it is very important while drafting the real draft. But for examiners, that they want to know that you understand drafting or not, what the content holds. Like they have divided the scheme of marking in drafting paper is like they give you approximately 6 marks for the format, the chronology of events, and rest of the marks, if it is of 20 marks question, the rest of the marks is for the content. So and also the drafting paper is also taken to understand that tomorrow you are going to be an advocate on record and practicing in this practicing as one of the privileged and esteemed advocate of Supreme Court of India. You understand drafting or not, because drafting is also most important, because it will aid you in earning more than anybody else initially. Later on, when you get other things that we are not going to discuss here, that is another part. But initially, to have a hold in the legal profession, it's good to have a drafting skill, and as good as you can become, because as good as you are, you will get more work based on your knowledge, acumen, skill, thought, everything that you put in your drafting. So drafting is a transaction. Uh, in every case, it is like a canvas, wherein you have to paint the entire idea of your client, what he wants to be put in it, what is there that will actually satisfy your client, what thought he has given you, and then you have to coordinate your thought, his thought, the knowledge you have, and the law points, everything that you have to link with each other and then put in your draft. And it has to be very carefully crafted, which is why lawyers are also called as wordsmith. They have to draft it like that, because draft is a living document, and it is to live and face the scrutiny of several interested parties, like the client, the other parties lawyers, the adjudicating authorities. So it ought to be carefully crafted, and you have to understand what it requires, what are the basic contents that need to be given in there, because if the other party comes up with any objections or counter your position, you have to answer that. You have to articulate in such manner that if at all it is you face some scrutiny, you are able to deal with it. Also, that you have to understand that the document or the language, it has to be good. The formatting has to be sequenced. It has because it and so for that you need to have the legal knowledge about everything, the client's case, knowledge about law, knowledge about the client's expectations, business sense, the analytical skills, eye for the details, improvising the skills, reasonableness, foresightedness, and many things. Whatever, because it's drafting actually needs a lot of things to be taken care of. You cannot just sit at one go and draft it. You have to understand every minor details of the case, of the client's opinion, thought process, and then conceptualize it properly. So you have to first think and then compose the draft.
because the drafting of legal document requires as a prerequisite the skills of draftsman, the knowledge of facts and law, so as to put facts in a systematized sequence. To collect, consolidate, and coordinate the facts is the real drafting. You have to understand what is everything that is required in the draft, the particular aspects. What every case has some aspects which ought to be taken care of. So everything has to be dealt in nicely and then knit together, so that when you present it before the court, the judges listen to you. They give you a hearing. Else it may get dismissed right away, because drafting holds a lot of importance. So and drafting has to have some purpose. Everything we do in this world, we have some purpose. So drafting also has to be based on some purpose. So behind every particular document, the primary aim is to provide ideas and proper information, provide clear and concise data, which could be easily understood by the client and satisfy his needs of the same. Also, the lawyer, while drafting a document, he should always keep in mind that there is always a motive. Like when you draft, you have to not only take care of your client, you have to, while arguing, you have to convince the judges. You have to make them understand that what you are up to. Then there may be scrutiny or a counter argument from the other side. So you have to take care of or think about those counter arguments as well, that what may come up when you write such and such things. Because until you think like that, you cannot draft in a proper way, because drafting requires so much thinking and knowledge, but to get so that you can draft in such proper way that you can win the case, you can satisfy your client, so that your clientele increases. Otherwise, why would you give your time to this profession, or why would you spend so much energy on this? Then there are certain principles of drafting, like formation of outline in a satisfactory manner. The draft is a frame of any document wherein everything, the relevant issues have to be dealt in. Then there has to be necessary details. It should be very clear, not ambiguous, and the language should be very much precise. It should flesh out all the relevant issues at one go. When somebody is reading it, they should clearly get what you are trying to say. Then the general scheme of the draft, the draftsman should first frame a skeleton draft, which could be filled in or elaborated as he proceeds with his work, so that when he discusses with his client or sits with him for a meeting, and the client, if he wants to add on, or if he wants to remove certain facts, or there the lawyer himself thinks that this is not required later on, so he has to have some skeleton draft for the meeting, and then he can work on it or elaborate it for the rest of the purposes that he has to deal with. Then there are emphasis on the arrangement of facts. The chronology actually has a big role to play, because whenever you tell a story, its draft is like telling somebody's story in your own words. So whenever you tell about your story to somebody, you have to tell them in a chronological way. Like until you tell them the initial part first, and then the structure should be like the body should be told after that, and then the conclusions should come. Like I will tell you about Supreme Court drafting of SLP. Like you have to tell the first thing is list of dates. You have to give the list of dates, that what events occur when, and after that you talk about the things. The structure comes after that. That what has happened. So you write the synopsis, you write the list of dates, and then you tell them about the main petition is drafted, and in that petition you write about the grounds, you write about the question of law, and then your contention, and then you come to the conclusion and the prayer, that what you want from the court, what kind of order you are looking forward to. Then there is style and language. Like style and language is the integral part or factor for transfer of any idea, any data. So it must be unambiguous, clear, and precise. Because until it is clear, there can be a lot of questions, and also that the interest will fade. The judges may not like to read the draft, and then you may lose out on that. So the grammatical mistakes and errors should be avoided as much as possible. The language should be very fine and precise. And then organization and structuring. The logical organization is the key to clear communication. The draft should be designed properly, which would include proper setting like margin, length of paper, numbering of pages, indicating everything like indexing, words, sentence length, sentence structure, ordering group, etc.
So for this, you have to, as much as I have known that the Delhi High Court and Supreme Court, they have already said that there should be a A4 size paper, the font should be like this, the margin should be such and such. So you have to follow that rules and regulation before drafting. You just cannot have your own way of writing anything and everything and putting forth to the court. So drafting is something which requires time. Rome was not built in a day. You ought to practice it, practice, practice, and practice. So there was one famous thinker who said, I would quote him here, C.K. Allen. He said that a perfect draft is not possible and it is only an ideal. To quote him, he said, to demand perfection of expression and sense is to expect infallibility, not only of human foresight, but also of human language. And the fact that it is unattainable is one of the serious drawbacks and drawbacks of statute law. Sorry. However, the draftsman should make efforts to reduce doubts, ambiguities, and mistakes to a workable minimum, which I've already said that as much as possible, the error should be avoided because it may irritate the judges while giving you a hearing or reading your draft. And they may have a frame of mind before you have already you're already in the court or arguing. They might right away dismiss your case if they are not at all satisfied with your draft or things. Then notices, that is the main topic that we are going to deal with today. Notices are another aspect, like drafting as a whole. I was speaking as of now. Now I'm switching on to notice. So notice is a legal or formal written communication between the parties through which the sender notifies the recipient about his intention of undertaking legal proceedings against the latter. The legal notice is actually meant to inform the opponent that you, if such and such action is not done, or such and such things are not performed, then there can be legal, the another party can take legal recourse. So they might be moving on to the court after you are not listening to them, or you are not not understanding the grievances of the sender. You have for that matter, if there is a loan that has been taken from a bank and bank wants its loan from the party, initially they will send a notice to the party, and the party, if he performs it according to the notice, then the bank may not go to the court. But if at all the party is not listening to the bank and not replying to the notice, or even if replying to the notice, not paying the loan back, the bank can take recourse to the court. It might get resolved by way of litigation or through negotiation, mediation, or arbitration, but that is another story. Notice has to be given to the other party to let them know that we want certain actions to be done from your side, and if you are not listening to us, we'll be battling it in the court. Then there are various types of notices. Notices can be served on a number of issues. It's a wide concept. So for example, I will say that, for example, like consumer forum, if there is some fault in the service of a product, you can reach out to the consumer forum for the rectification of the deficiencies. Then disputes related to property, such as partition, eviction, issues relating to possession of the property. The loan defaulters, like I said about the banks, that securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Securities Act 2002, that is SARFAESI Act in short. The debt recovery proceedings begin by sending a legal notice to the defaulters. Cases under the Negotiable Instruments Act, wherein the dishonor of checks, check bouncing, etc. is taken care of. Money recovery cases, then employer and employee issues with the company, matrimonial cases, and a number of cases. There are a number of issues where notices are the first thing that you go in for, and if you send the notice, then only you can proceed with further action. You cannot right away jump into the courtroom and get your things sorted out. So there are certain legal provisions related to the notice, like Section 80 of the Code of Civil Procedure 1908 lays down the provision for sending of a legal notice to the government or public officer if one wants to initiate an action legally against any act claimed to be done by a public officer during the course of his employment.
of any official duty until 2 months has expired. The purpose of the notice is to give public officer a chance to offer some kind of compensation after re-evaluating his legal position and resolve the issue without going to a court of law. Besides, the defendant is being given the opportunity of being heard by giving him the reasonable time to answer on the mentioned accusations and inform the court whether he agrees or disagrees with the facts contained therein. There was a leading case on this in Bihari Chaudhary versus State of Bihar. Supreme Court has stated that the object of the section is the advancement of justice and securing of public good by avoidance of unnecessary litigation. And of late, the court has very clearly come up with, and especially the Chief Justice of India has been advocating the alternate dispute resolution methods. He has been saying that to bring everything to the court is not fair and litigation should be avoided. Moreover, the thing should be settled by way of arbitration more. Then there are essentials of legal notice or format of a legal notice, like name, description, place of residence of office, chamber, or a residence of the sender. Then a statement of cause of action, the relief claimed by the sender of the notice, summary of the legal basis for the relief claim. Then elements of legal notice. Legal notice is filed under Section 80 of CPC and is only filed in civil cases. A legal notice is an intimation and thus carries the information like precise statement and facts relating to the grievance for which the action is to be initiated. Alternatives, relief sought by the grieving party, a summary of facts and the ways of how the grievance could be resolved. Then a complete brief of the problems, a detailed account of how the relief can be obtained, the problem solved if mutually agreed upon the grievances. It is so it is very important to it is very important that a legal notice is crafted well. It should be precise, clear, unambiguous, and the attorney should draft it very keeping in mind the thought process of the client. It should be taking care of every detail that client has given to the attorney. So taking help of an attorney is very important while drafting a notice. An ordinary man can himself also draft a notice, but then that will not have such impact which a notice drafted by an attorney will have. Thereafter, the attorney might go for mediation between the parties to solve the issues out of the court. Proper legal language and words must be used as measures of caution, because if it is not properly drafted or the language has any kind of ambiguity, then the other party may deny in the courtroom, and then there may other problems may come up, like they may not admit any fact, or they may create any kind of hassles. So therefore, a legal notice is important for future reference, and for this, an expert lawyer has to keep such intricate details in mind and prepare a well-drafted notice. There are some do's and don'ts of drafting, though I have been entirely in the lecture, I have been mentioning all those points. Still, I have jotted down few points, and they are like reducing the group of words into single word, using simple verb for a group of words, avoiding roundabout construction, writing shorter sentences, expressing the ideas in fewer words, because if you write shorter sentence, you will be clear, because long sentences lead to ambiguity, lead to confusion. You might yourself may not understand that what I'm trying to say if you read it later. Then prefer the active to the passive voice sentences, choosing the right word, then know exactly the meaning of the words and sentences you're writing, and then put yourself in the place of reader, read the document and satisfy yourself about the content, interpretation, and the sense it carries. And the don'ts would be avoid the use of words that sound similar. Then when the clause in the document is numbered, it should be conveniently numbered. Like it should be numbered like 1, 2, 3, 4 or ABCD. There should not be many clauses inside the sentences. You better segregate the sentences and put them into points in a bold way. The bullet points are readable and understandable. The clauses might get lost in the draft itself. The negative and successive phrases would be very carefully employed.
draftsman should avoid the use of words less than, more than. Instead, the word should be like not exceeding. If the draftsman has provided for each of the two positions to happen without each other and also happen without either, will not be sufficient. He should write either or both, or express the meaning of the two in other clauses. Like I said, everything should be segregated. It should be put clearly in points. So any kind of confusion, be it with respect to pointing up pointers, with respect to clauses, with respect to numbering, with respect to the terminologies, with respect to the language, there should not be any kind of confusion there if the draft is being read, because the confusing draft is not appreciated. Nobody would like to read a confusing document. We don't even read ourselves. If we read something, we want to read a good stuff. We don't want to read something which holds so many thoughts together and then leads nowhere. So then the conclusion the part from my side would be like, take care of while drafting, that it should be clear, it should be very precise, it should actually tell the story in a chronological way. So drafting is an art. First of all, drafting is an art, and any lawyer who is drafting is an artist. We have to take care of that art, and then we have to paint it on the canvas that I have been telling initially itself. So a lawyer should be knowledgeable enough. He has to have the legal knowledge and acumen to understand the client's mind, to make him understand the nitty-gritties of law, because if you have to give him a good hearing, and you have to accept all the brief that comes to you. You have no choice. You are not going to be given any choices. You have to like, if you tell your client that the case is not made, and so I cannot fight your case, still your client says that you have to fight for me, I want you to fight my case, you have to take the brief, you have to accept the brief. Bar Council of India rules maintains it very clearly that a lawyer cannot should not be saying to his client that he cannot accept his brief until and unless there are valid reasons for it. So for such reasons, there may be some reasons like financial or something. For that, you can only say that, or the case is so much that you cannot do such cases, like you're out of station, or you are not very good at that case, you are not an expert, or you don't feel confident of doing those cases, you may not do it. But then if you can do it, and it's just that matter of time, or if a matter of knowledge, you have you may lose the case, but you have to understand that your client needs your support, and for that you have to go through the brief, you have to do all the research, and after that, if you draft it, the art or craft a good way, and the precision will actually give you a very good result. And when you go to the hearing in the court, and even if you don't have very drafting, you may argue so well, and you may get such relief that you might be wanting. But so with this, I will conclude that a good lawyer has to be a good draftsman as well. That is the need. थैंक यू डॉक्टर झा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत रखी कि जो ड्राफ्टिंग है वो एक आर्ट है अपने आप में। और डे बिफोर यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद समवन, इज अ लॉर्डशिप इन राजस्थान, so he was telling one concept at their keep it simple and short when you are putting anything else. They use the acronyms for that one. So आपने पूरी बातचीत रखी। मेरे साथी वैभव पारिक और सोनल कुछ के प्रश्न रखेंगे। उससे पहले एक प्रश्न हमारे साथ एक राष्ट्रीय है, उनका आया है, मैं उसको रख देता हूँ आपके सामने, और मैं चाहूंगा आप हिंदी में भी थोड़ा सा रखेंगी तो उन्होंने कहा कि बीइंग ए स्टूडेंट, मान लीजिए आज से आप 15 साल 16 साल जब आपकी एकेडमिया पूरी हुई और आप उसके बाद प्रैक्टिस में आए, तो आप एक नए स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी ड्राफ्टिंग को बहुत बेहतरीन बना सकता है? उसको 4 स्टेप ये करनी चाहिए। What 4 steps he should be or she should be taken when after the completion of degree you are coming in a practice? तो आपको क्या चीजें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? ओवर टू झा, डॉक्टर झा।
ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले जब आपका एकेडेमिया खत्म होता है, आप पहले डिसाइड करते हो कि आप लिटिगेशन में जाओगे या आप कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट लिटिगेशन करते हो। वहां पर जब आप कोर्ट जाते हो, आपके सीनियर्स के ड्राफ्ट पढ़े होते हैं। यू हैव टू इंकलकेट विद इन योर सेल्फ, आपको डेवलप करना होगा अपने अंदर पढ़ने की आदत, क्योंकि जितनी ड्राफ्ट आप पढ़ोगे, सारे ड्राफ्ट हो सकता है उतने अच्छे होते भी ना हो, लेकिन जब आप पढ़ते जाते हो तो एक आपका खुद थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। आपको पता चलता है कि ड्राफ्ट, पहले तो ड्राफ्टिंग होती क्या है, फिर उसके बाद क्या ड्राफ्ट होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपका इतना डेवलपमेंट हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि आप समझने लगते हो कि ड्राफ्ट में क्या खूबियां या कमियां हैं, आप सेग्रीगेट करने लगते हो। उसके अलावा किस तरह का लैंग्वेज यूज हुआ है, क्योंकि हम जो लॉ करते हैं 3 साल या 5 साल, उसमें सब कुछ तो कवर हो नहीं पाता है। तो बहुत सारी चीजें हम कोर्ट जाके सीनियर्स के चेंबर में ही सीखते हैं। तो वहां पर अगर जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके डाउट्स भी होते होंगे, वो आप सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हो, और आपके साथ पीयर ग्रुप भी होता है वहां पर। कोर्ट में बहुत सारे ऐसे आपके जैसे सीखने वाले या आपसे थोड़े बहुत सीनियर जो होते हैं, जो आपको गाइड भी कर देते हैं, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो। तो आप जब ड्राफ्ट पढ़ोगे, पहले पढ़ने की आदत, फिर उसको सोचने की आदत, एक थॉट प्रोसेस तो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि कौन से मैटर में किस तरह की सोच के साथ हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब मैट्रिमोनियल केसेस पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल केसेस ड्राफ्ट नहीं होंगे, तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके क्लॉजेस उसमें नहीं जा सकते, या कौन से क्लॉजेस कहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह से क्लैरिटी आपके अंदर आती जाएगी। तो ये चीजें हैं। फिर रेगुलरिटी, अब आज पढ़ा फिर अगले महीने पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, रेगुलर होना पड़ता है, आपको लगातार उस पर काम करना पड़ता है। तो रीडिंग की हैबिट हो, रिसर्च की हैबिट हो, रेगुलरिटी हो आपके पढ़ने में, थॉट प्रोसेस डेवलप करना हो, डिस्कशन हो, इतना होना चाहिए। थैंक यू सच एन वंडरफुल मैनर यू पुट ऑल द थिंग्स। वैभव सर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। व्हाट इज वैभव सर? थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा इंसाइटफुल दिया, और आपका ये कंसेप्ट कि पहले समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आदत करनी चाहिए, उससे ड्राफ्टिंग और ज्यादा बेहतर हो सकेगी, वो बहुत अच्छा एक की पॉइंट है जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लेके जाएंगे। एक एडवोकेट राखी जी का एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द लीगल नोटिस और डिमांड नोटिस लीगली व्हिच हैज बीन ड्राफ्टेड लीगली, और एक नॉर्मल डिमांड नोटिस, मतलब क्या डिफरेंस होता है जब अपन एक नोटिस को ये कह सकते हैं कि ये लीगल नोटिस माना जाए? लीगल नोटिस ऑब्वियसली वी नो कि उसमें हम लॉ पॉइंट्स भी देते हैं कि हम इस तरह से आपका डिमांड करें, कभी कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए, कभी जैसे हमें अपॉइंट किया जाता है तो होता है, या फिर कोई क्लाइंट आपके पास प्रॉपर सेंस में आता है कि हमारा ऐसा इशू है, तो हम अपने प्रॉपर लीगल एक्यूमेन इस्तेमाल करके करते हैं। और जो जनरल नोटिस होती है जो किसी और के थ्रू आता है, उसमें वो सारी चीजें ही मिसिंग होती हैं जो अपने आप में डिफरेंशिएट कर देती है दोनों चीजों को। तो यहीं पे क्लैरिटी आ जाती है, और अथॉरिटी नहीं होती है उसके अंदर, उसे पता नहीं है ना कि किस तरह से, जो लॉयर जो अटॉर्नी ड्राफ्ट करता है वो जानता है कि क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए करता है। और एक नॉर्मल इंसान जो डिमांड करता है किसी चीज को, वो अपने तरीके से करता है, कितना भी एम्फैटिकली करे, बट वो लॉ पॉइंट्स मिसिंग हो सकते हैं, या कोई ऐसी इशू मिसिंग हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उसके आगे कमजोर पड़ जाता है। थैंक यू सो मच मैम। कोई आप बुक रेफर करना चाहेंगे मैम जिससे बेस्ट ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के स्किल्स आ सके? मैंने जो अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए पढ़ी थी वो केसी गुरुचारी की, अब फोटो कॉपी शायद मिलती है, बुक तो नहीं मिलती है, लेकिन वो उसमें काफी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। बट यस, आई विल डेफिनेटली से कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है ज्यादा, पर आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हियर ओनली, तो मैंने तो दूसरे कोर्ट्स के सिर्फ फॉर्मेट्स देखे हैं और जो कभी आए हैं मैटर्स तो ड्राफ्ट के। बट ये इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेशंस और जितने भी पिटिशंस हैं वो सारे एक जगह मिल जाते हैं। एंड मैम बेसिकली एक इशू आता है व्हेनेवर एनी लॉ स्टूडेंट जब वो यूनिवर्सिटी पास आउट करता है, उसके बाद भी उसको ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग में बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जबकि ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो उसको कैसे कोप अप किया जाए? क्या ये सब्जेक्ट एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं क्या उनको नहीं टेक ओवर कर लेना चाहिए, जिससे वो एटलीस्ट बेसिकली जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है वो डायरेक्टली बता सके कि क्या चीज सही है और कैसी चीज उसको आगे बढ़ाया जा सके? क्योंकि जो लेक्चरर्स होते हैं वो एकेडमिक नॉलेज तो दे पाते हैं पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते। हाँ, लेकिन अकेडमिया में जाने वाले लॉयर्स तो होते नहीं है, तो वो तो वहां पे तो वही लेवल पे बताया जाएगा। हाँ जी। इनिशियली जो मैंने बताया कि कोर्ट आकर ही सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें यही सीखनी पड़ती हैं। वो कितना भी वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कुछ बताते भी हैं टीचर्स, तो वो अपने लेवल पे बताते हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन
कोर्ट के नजरिए से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनका खुद एक्सपोजर शायद नहीं होता है। तो इसलिए, लेकिन ये डिफरेंस तो रहेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि लॉयर्स टेक ओवर कर ले, क्योंकि लॉयर्स को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा फुल फ्लेजेड। वो 3 आवर्स उनको मिलता है, और 3 आवर्स में सबको तो पढ़ाने मिलता है। कितने भी अच्छी ड्राफ्टिंग कर लो, जरूरी नहीं है पढ़ा सको। पढ़ाना भी एक आर्ट है, तो इसलिए दोनों को मिला नहीं सकते। डॉक्टर झा, Yes, मेरा एक ma'am. क्वेश्चन था। हाँ, मैं बुलाता हूँ राखी जी आपको। यहाँ ज्योति हमारे साथ बैठी है। ज्योति ने अभी पिछले 4 साल से प्रैक्टिस चालू की है। तो यदि मान लीजिए आपको दोबारा मौका मिले 15 साल पहले जाने का, तो आप क्या 4 चीजें नहीं करना चाहेंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि मैं ये नहीं करती तो दोबारा यदि मुझे रिवर्स में जाने का मौका मिले तो ये नहीं करती और ये करती? उनको सजेस्ट करें जरा, बीइंग ए मेंटर। कुछ चीजें ऐसी होती है, हम सब गलतियां करते हैं। अब मैं बोलूं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, ये नहीं हो सकता है। कई चीजें होती हैं, चाहे आपसे कोई इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट पढ़ना रह जाए, ये आपकी गलती, आपको लगता है कि क्या हो गया, नहीं पढ़ा तो। वैसे भी हमें तो आर्ग्यू करना नहीं है, सीनियर को करना है, बट पहले केयरफुल रीडिंग की बात होती है। मैं थोड़ा सा मतलब आई हैव बीन लिटिल केयरलेस। तो थोड़ा ना, तो ये नहीं कि पढ़ने में आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल थोड़ा केयरलेसनेस रहती थी मेरा कि ठीक है करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी कॉन्शियस कि जो भी चीज आपके सामने है, या कोई भी कॉन्वर्सेशन, लाइक स्पेशली वो जो क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है या कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है, वो केयरफुली सुने। वहां से बहुत कुछ सीख जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पंक्चुअलिटी होती है। मैं केयरलेसनेस इस सेंस में कह रही थी, लाइक इनिशियली आई वाज लाइक कर लूंगी। थोड़े दिन में मुझे लगा कि नहीं कर लूंगी, नहीं अभी अभी करना है, नहीं तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई विल से कि मैं जो थोड़ा सा लेजीनेस था, दैट ये मेरा था, तो आई विल से कि लेजीनेस नहीं होना चाहिए। और दूसरे के लिए तो मैं नहीं कह सकती, एवरीबडी नोज देयर वीकनेस। मैं इनिशियली थोड़ा लेजी थी, एंड आई एम लाइक, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है आराम से काम करते हैं, आराम से काम होता नहीं है, काम जब आता है तो करना पड़ता है। तो दैट्स इट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था, है ना। कई बार हमारे यहाँ राजस्थान में या बहुत सारे नए बच्चों को भी मैं देखता हूँ, वो कहते हैं इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है एडवोकेट में। लेकिन मैं मेरे कुछ साथियों को देखता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे मैं देख रहा हूँ यूएस में, यूके में काम कर रहे हैं, तो कहते हैं यार कभी 2 बजे जाना होता है, कभी 3 बजे जाना होता है, कभी कभी सिस्टमेटिक भी होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारा उनको उसके साथ नेम और फेम भी मिला है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि एडवोकेसी इज ए वेरी इजी टास्क। इजी टास्क तो है, लेकिन नहीं नेम और फेम के लिए क्या देना पड़ता है वो जरा वो भी आप एक बार बता नहीं, देंगे? इजी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई थिंक वैभव सर विल आल्सो अग्री विथ मी कि हमारा तो सबसे वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन है अक्रॉस द ग्लोब। किसी से भी कहीं भी बात करो, स्लो भी है और टफेस्ट भी है। ऑल्सो इसमें टाइम लिमिट भी नहीं है, 24/7 आप काम कर सकते हैं, वो भी कम पड़ जाता है। इनिशियली वही तो मैं कह रही थी, इनिशियली मुझे लगता था इतना क्या करना है, टेंशन लेना है, कर लेंगे, विच इज व्हाई आई सेड दैट अबाउट मी। लेकिन फिर समझ में आया कि ऐसे करेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि काम इतना ज्यादा है, काम तो कभी पूरा ही नहीं हो रहा, और आप आराम से बैठ के सीख सकते हो। तो बड़ा मतलब सारी चीजें टाइम सिस्टमैटिकली आप टाइम के साथ कर, तो फिर भी काम पूरा नहीं होता। काम अगर है तो बहुत काम है, तो वो उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें कभी भी नहीं होता कि आप कहो कि अरे नहीं अभी तो 2 बज रहे हैं रात के। आपका सुबह मैटर अगर लिस्टेड है और आपको आर्ग्यू करना, आपको रात भर पढ़ना पड़ सकता है। यू हैव टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल। इसमें कोई भी लिबर्टी नहीं है कि आप कहो कि नहीं नहीं हम कल कर लेते हैं, बिकॉज फिर आप देख लो, फिर कल से वो क्लाइंट आपके पास थोड़ी आएगा, जो इतना करेगा उसके लिए उसके पास जाएगा। तो ये सबसे टफ प्रोफेशन है। आई डोंट नो कहाँ किसने कहा है, मैंने नहीं सुना है किसी से कि ये इजी प्रोफेशन है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन ऑल्सो, इसीलिए इसको ज्यादा फीमेल कर भी नहीं पाती है, बिकॉज दे हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किड्स। वो जरूरी ही है, मैं इसको भी डिनाई नहीं करती, बट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो बहुत महिलाएं कर भी नहीं पाती हैं। एंड ज्यादा इसीलिए मेल डोमिनेटेड भी कहा जाता है इसको, बिकॉज आपका जो फोकस है वो पूरा एक काम पे होना पड़ता है। नहीं अगर हो सकता तो, वैसे हर फील्ड के लिए होता है, लेकिन फिर भी इस प्रोफेशन में जहाँ टाइम लिमिट नहीं है, जहाँ पर वर्क आवर्स लिमिटेड नहीं है, वहां पर बहुत सोचकर कदम रखना पड़ता है। तो परफेक्टली बोला मैम आपने। राखी जी हैं हमारे साथ, हमारे सोनल भी पूछेंगी, कोटा से हैं अभी। राखी जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइन में दे दें और फिर मैम से क्वेश्चन पूछें। Hello everyone. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Advocate राखी बुद्धि राजा। मैं हरियाणा के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, and I am the first female lawyer of my town.
Great. So I'm into practice since 2002 and presently working as an advocate in Supreme Court and mediator as well. Besides that, I'm a post trainer. जैसा कि वैभव जी ने बोला था कि हम इसको एक प्रैक्टिस का पार्ट बना सकते हैं, सो वैभव सर, मैं लॉ स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को प्लस फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को इस टाइप की ट्रेनिंग पिछले 5 साल से दे रही हूँ. That is completely free of cost. I'm used to give the training through online media and college to college, school to school मैं visit करती हूँ, तो उनको इस टाइप से ट्रेनिंग देती हूँ. इवन मेरे पास जो इंटर्न्स आते हैं 1 month ट्रेनिंग के लिए, 2 month ट्रेनिंग के लिए, मैं उनको कोर्ट 1 या 2 बार लेकर जाती हूँ. लेकिन मेरा मानना ये है कि दिस इज द बेसिक थिंग जो उनको पहले आनी जरूरी है. तो दिस इज द थिंग कि मैं बच्चों के साथ ऑलरेडी ये चीज स्टार्ट कर चुकी हूँ. इवन आप शायद म्यूट हो गई है. अगर इस एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व होना चाहता है या सर मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आई विल बी हाईली थैंकफुल. चलिए सोनल, आप मैम से, डॉक्टर झा से. क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैम कि लोअर कोर्ट की ड्राफ्टिंग सोनल, तुम, आपका साउंड ठीक नहीं आ रहा, जरा उसको स्पीकर को पास में ले लो. अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लोअर कोर्ट की जो ड्राफ्टिंग होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना, तो इसको हम क्या मैच नहीं कर सकते कि मतलब जैसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्टिंग होती है या हाई कोर्ट में ड्राफ्टिंग होती है, वो अलग चीज है कि भाई पॉइंट ऑफ लॉज उसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें फैक्ट और लॉ तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से एनेक्चर वाइज उसमें बने होते हैं ना, मैंने देखी है कुछ ड्राफ्टिंग से कुछ केसेस की, तो क्या ये लोअर कोर्ट में अप्लाई नहीं हो सकती है? हर कोर्ट के वर्किंग का अपना स्टाइल होता है, वो अपने तरीके से चलती है. तो किसी भी कोर्ट को, आप हाई कोर्ट का देखोगे वो भी अलग है सुप्रीम कोर्ट से, तो किसी भी कोर्ट को किसी कोर्ट से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ना उनके एक लेवल पे लाना पॉसिबल है. हायरार्की है, ये लोअर है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है. ये हायरार्की है, तो काम करने का तरीका भी तो वेरी करेगा, तो इसलिए हम उसको नहीं मिला सकते. हाँ, बेटर ड्राफ्टिंग की बात कर सकते हैं, जो अच्छे से ड्राफ्ट होता नहीं है कई बार, डॉक्यूमेंट वो ना हो, अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट सिमिलर फैशन में कैसे कर सकते हैं? वो जो सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चलती है, तो वो नीचे नहीं ला सकते, तो नीचे वाला भी वहां नहीं जा सकता है. सो इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डन, कि हाँ तो कितनी अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हो, ये सब कर सकते हो. यू कैन नॉट स्वैप द थिंग्स अपने हिसाब से. चलिए वैभव सर, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, या और कोई साथी कुछ पूछना चाह रहे हो? देखिए डॉक्टर झा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एडवोकेट राखी जी ने कहा कि इट्स द नीड ऑफ आर. हमने यहाँ ये चालू की है सीरीज अभी शने शने करके. जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आप अपने साथियों की या आप जो दूसरी कोई प्लेंट है या कुछ भी है उन्हें पढ़ना चाहिए. तो जो 1 और 15 की एक्टिविटी हमने जैसे जजमेंट राइटिंग पर वो रीडिंग पर चालू किया है, जजमेंट को डिस्कस करें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ नए शब्द आए हैं. तो क्या आप ऐसा भी सजेस्ट कर रही हैं हमारे को कि आपको जो 1 और 15 की आपको डिकोड योरसेल्फ करके एक्टिविटी है, उसमें किसी प्लीडिंग को भी चर्चा करनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब? कर सकते हैं, ये सारे तो लीगल इश्यूज, हम नॉलेज इम्पार्ट करने की बात कर रहे हैं. जैसा कि अभी वैभव सर कहते हैं कॉलेजेस में जाके, कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं होगा. जैसे राखी मैम कह रही है ना कि इंटर्न्स को ट्रेन करना या ऑनलाइन करना. इनफैक्ट मैं भी काफी, जैसे मुझे जब भी मौका मिलता है किसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं करती हूँ, तो हम इसी तरह कर सकते हैं. अदरवाइज हम कैसे नॉलेज इम्पार्ट करेंगे? फिर हमारा, अगर हम, हो सकता है हमारे में भी कमी हो, कई चीजें हमें नहीं पता है, तो हम जब डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, हम उन चीजों पे बात करते हैं, तो हम कुछ सुनते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ पढ़ के आते हैं, कुछ रिसर्च करके आते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए. वैभव सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, सब कुछ कवर करा मैम ने, बहुत अच्छा बताया.
चलिए, बहुत एक अच्छा। मिस्टर दीपांकर है, उन्होंने कुछ बोला है जजमेंट को लेकर। दीपांकर चक्रवर्ती। दीपांकर सर, आर यू एट हियर? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स इन आवर डिस्कशन? कोई और साथी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हो या कुछ पूछना चाह रहे हो? You can unmute yourself and ask the question, or either you can make a submission. I'm Dipankar. I'm actually the legal and HR manager in one IT company. Okay. So I have got this invitation from one of my senior and I've joined this program. And I find her lecture is very good and very simple way she has discussed. But मेरा ये अप्रोच है, जो आप जजमेंट रीडिंग का बारे में कोई ये प्रोग्राम करेंगे, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू मी आल्सो। मैम ने मटेरियल भी शेयर किया है जो आपको ईमेल पे भेजा जाएगा। इन्होंने बहुत एक्सक्यूज मी, जी, कुछ जी। मटेरियल में मैंने ना टाइपोलॉजिकल एरर्स देखे हैं, छोटे मोटे हैं, लेकिन वो उससे मीनिंग चेंज होता है। सो उस पे थोड़ा सा उसको करेक्शन की जरूरत है। आई विल सेंड यू अनदर ड्राफ्ट जी, टुडे। जी, जी। हमने आपको समय नहीं दिया था मटेरियल तैयार करने का, तो आपने बहुत जल्दी में भेजा। बट और एक है मेरा अप्रोच, जो मेरा ये इच्छा है, जो मैडम राखी बुद्धिराज मैडम जो बोल रहे थे, शी इज ऑल्सो ए पॉश ट्रेनर। तो आपका इस प्लेटफॉर्म में पॉश का बारे में एक्चुअली अभी भी ना पॉश इंडिया में लागू हुआ है, लेकिन उसका बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, ना एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय। दे डू नॉट नो द मैकेनिज्म, दे डू नॉट नो व्हेयर टू अप्रोच। So even the employer is fearful condition, employee is fearful condition. एम्प्लॉय सोचते हैं मैं इसको कंप्लेन करूंगा तो मेरा नौकरी जाएंगे। एम्प्लॉयर बोल रहा है भाई ये मेरा अपना कारपेट में छुपा के रखो। तो आप लोग कभी भी एक अच्छा से पॉश का प्रोग्राम करें इस प्लेटफॉर्म में, तो दीपांकर आई सर, अंडरस्टैंड इट विल बी। मैं उसमें ऐड कर दूं, ILA इंडिया हर महीने के सेकंड या थर्ड थर्सडे को एक रेगुलर एक्टिविटी करता है। वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। रेगुलर एक्टिविटी है वो, जैसे ये रेगुलर एक्टिविटी हो गई कि एवरी 4th ऑफ द सैटरडे 11 to 12 दिस वन एक्टिविटी। ILA इज ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर एक्टिविटी फॉर दैट वन पॉश। चलिए, आपने बात रखी, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो? चलिए, हमारे बीच में जोसन सर भी है। हमें अच्छा लगेगा अगर जोसन सर इस बार कुछ मैसेज कन्वे करें। पिछली बार टेक्निकल इश्यू हो गया था। जोसन सर, आर यू हियर? Yes, I am here. I was just listening. या मुझसे कहा गया था कि हिंदी में ही बोलना चाहिए, तो मैं मैम से भी यही कहा था। कोई बात नहीं। ये जो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है इसमें हार्ड वर्किंग की जरूरत तो बहुत है, लेकिन ये उतना टफ नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। अगर इच्छा है करने की, रुचि है, तो बड़ा काम भी हम कर सकते हैं। लॉ इज वेरी सिंपल, बट क्योंकि ह्यूमन लाइफ्स जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कितना भी लॉ सिंपल क्यों ना हो, एक इंसान के प्रॉब्लम्स को जब वो बेचारा लॉ सॉल्व करने की कोशिश करता है तब लॉ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए वकील को कानून के साथ साथ लोगों के जो आपसी बर्ताव जो है उसके बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। और ड्राफ्टिंग के साथ साथ जिस जज महोदय के सामने हम अपना केस पेश करने जा रहे हैं, उस महोदय के बारे में भी उनकी जो रुचियां कैसी है, उनका मिजाज कैसा है, वो कितने टॉलरेंट है, कितने क्या कहते हैं, वो सब आपको स्टडी करना जरूरी है। समझो अगर आपका कल एक अहम आर्ग्यूमेंट है, एक दिन पहला जाकर उस महोदय के सामने जाकर बैठकर आप उन्हें स्टडी कीजिए केस, फिर वापस से उस हिसाब से और अच्छे से स्टडी करिए, फिर पेश करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। बस अभी तो समय की सीमा भी है, तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जोसन सर को खूब हिंदी पढ़नी पड़ी हमारे लिए। चलिए, मैं आपको बता दूं,
कि जॉसन सर पिछले बार के हमारे कीनोट स्पीकर थे। आपने बहुत बढ़िया वीडियो बना के भेजा और आप टेक्निकल ग्लिच के कारण जुड़ नहीं पाए थे। आप मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, मैं एक कई मेंटरिंग समूह में बैठता हूँ, तो हम जो लॉयर है उनको यदि कुछ बच्चे मास्टर इन साइकोलॉजी भी करना चाहे तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं बहुत बार लोगों को ये कहता हूँ कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी लॉर्डशिप, you should observe all the gesture and posture of that him also, क्योंकि जो जुरिस्प्रूडेंसिया है या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो हमारी पूरी प्रैक्टिस पर इम्पैक्ट डालते हैं। शायद डॉक्टर जहां भी इस बात पर अपना इनपुट देंगी, और हमारा समय लगभग हमारे पास 5 से 6 मिनट शेष है। उसके बाद मैं सोनल को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर जहां लास्ट रिमार्क के लिए आपका कि जो जोसन सर बात कर रहे हैं मुंबई से, what would you like to say or what would you like to add, because you have a ground zero experiences of a Supreme Court and all of things, so you can add a lot of things in our practice, in our learning also. Over to Dr. Chan. एज सच जैसा कि अभी हमने इतना डिस्कस किया सब कुछ, एंड सर कह रहे थे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सही कह रहे थे, बिकॉज अगर हम पैशन से करते हैं तो फिर ये काम हमें, जब कोई भी काम इंटरेस्ट लेने से आसान होता है, हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम फोर्सिबली जो भी काम करें, कोई भी काम हो, चाहे वो उस काम में हमें, जैसे टीचिंग है, कहने को टीचिंग को लोग इजी जॉब बोलते हैं, बट जो पैशनेट टीचर्स होते हैं वो हर समय उसमें कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, कौन सी चीजें बच्चों को कैसे बताई जाए, क्या नई चीजें बताई जाए, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो लगे रहते हैं उसमें। वो तो आपके पैशन पर डिपेंड करता है। डिमांडिंग प्रोफेशन तो ऑफकोर्स है, ये तो मैं कहूंगी, इसमें टाइम का भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है कि कभी आपके पास एक आध दिन ऐसे फ्री हो कि लगे काम ही नहीं है, और कई बार होता है कि कब जाके हमें टाइम मिलेगा, तो ये सब तो होता है। लेकिन still, since I like the profession and I have been trying to make my place. I'm a first generation advocate and nobody in my family has been related to this profession. So I have come so far only on my own. यहाँ कोई recommendation या किसी तरह का कुछ भी, कोई भी पीछे का जो element होता है कि हाँ ये चीज रही होगी आपके साथ, any kind of support or any kind of thing, तो मैं जब इतनी कोशिश कर रही हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि anybody who does it passionately, who does it interestedly can do it. तो ये सबके लिए है, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, किसी भी जगह पे आप काम करें, आप दिल से करें। आप जब उस प्रोफेशन में अपना 100% देंगे तो वो प्रोफेशन या वो जगह आपको जरूर कहीं ना कहीं वापस कुछ देगी, रिटर्न मिलेगा आपको। इट मे टेक टाइम। ये प्रोफेशन को स्लो प्रोफेशन तो पूरी दुनिया कहती है, तो हम ज्वाइन करें और हमें तुरंत कुछ चाहिए। जैसे कि एक इंजीनियर की जॉब लगती है या एमबीए की जॉब लगती है एंड दे गेट अ गुड पैकेज, और वो बढ़ता जाता है थोड़े टाइम तक, तो उस तरह से नहीं है। इसमें आप के साल दर साल लगते चले जाते हैं, तब जाकर आप कहीं पर पहुंचते हैं। ये चीज है, डिफरेंस तो है, लेकिन इसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और एडवोकेसी जो है बहुत, इसमें नॉलेज इज एवरीथिंग अबाउट नॉलेज, रीडिंग, रिसर्च, इसमें हार्डवर्क बहुत लगता है। पढ़ने में बहुत लोगों को, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको इसमें नहीं आना चाहिए, मैं जरूर कहूंगी। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है या जो इतना टाइम पढ़ने में लगा सकते हैं उनको आना चाहिए, जो हर वक्त ये समझने के लिए तैयार है कि हमें काम करना है और 100% हर समय काम करना है, देन दे कैन कम इन दिस प्रोफेशन। ये तो मैं कहूंगी, ये रिक्वायरमेंट है। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए, और आप जो भी है, आपको एक एक्यूमेंट डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर। आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप जरूर आओ। ये मेरा अपना ये ख्याल है। चलिए, आपने बहुत बढ़िया रिमार्क दिया। और मैं, देखिए, हमारी ये कोशिश है आईएलए राजस्थान की और आईएलए इंडिया की कि हम एक माहौल बनाए पढ़ने और पढ़ाने का और म्यूचुअल लर्निंग का। हम भी कोई ज्ञानी आदमी नहीं। आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर विदोत्मा झा ने तो शुरू में ही कह दिया कि वी आर एट हियर फॉर म्यूचुअल लर्निंग। तो ऐसे ही आपने अपनी ईमेल दी है। आप आईएलए राजस्थान में, इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। हम आपको ईमेल करेंगे, उस पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक फीडबैक फॉर्म देंगे, एक आपसे गूगल रिव्यू भी चाहेंगे। और यहाँ हम तो ये चाहते हैं कि हम सामूहिक रूप से समझने, जानने और कलेक्टिव इन्वायरमेंट बनाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अपग्रेडिंग का।
तो वैसे तो मेरी साथी आपको ग्रेटिट्यूड शो ऑफ करेंगी, डॉक्टर जॉसन भी और आप भी। आप जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत चीजों में हमारे से ज्यादा जानते होंगे, तो आप हमें सिखाइए, बताइए। हम एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर झा और जॉनसन सर ने कहा कि कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं है। भाषा को लेकर जब आप इंजीनियरिंग की बुक पढ़ते हैं तो पहले बार तो नीलबटा सन्नाटा होती है, पहले दिन कुछ नहीं समझ में आता है ना। ऐसे ही लॉ भी है। तो हर चीज का अपना एक एरिया है, हर चीज को समझना पड़ता है। जैसे मुझे कोई कहे चपाती बनानी है, तो मेरे लिए तो वो एक बड़ा युद्ध हो गया, है ना, मुझे नहीं आता। तो दैट माइट बी थिंग। लेकिन जब हम यात्रा पर उतरते हैं तो निश्चित रूप से हम बढ़ते हैं। और ILA राजस्थान और ILA इंडिया का यही प्रयास है कि हम भारत में एक माहौल बनाएं, लॉ को समझने के लिए एक अच्छे सिटीजन तैयार करें। मेरे साथ मेरी पूरी टीम, यानी मेरे साथ मतलब हम पूरी टीम काम कर रहे हैं यहाँ। आप भी अपने क्षेत्र में काम करें तो हम सामूहिक रूप से मिलकर एक अच्छा माहौल बना पाएंगे। शिक्षा की नगरी कोटा से हमारी कोटा की प्रेसिडेंट है सोनल विजयवर्गीय, कमिटेड लीडर है अपने आप में। और हमारे लिए वो इंस्पिरेशन, जैसे वैभव भी मेरे से छोटे हैं, ये भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। इनके पास जो अकुमान है, मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ वो, लेकिन वो जो चीजें लेके आते हैं वो हमारे लिए बहुत काम करती है। तो आप 1 और 15 को जुड़ सकते हैं, हर महीने के लास्ट सैटरडे को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी आपको कुछ लगता है तो हम सामूहिक रूप से कुछ बेहतर कर सकते हैं। लास्ट में ग्रेटिट्यूड डॉक्टर झा के लिए और आप सबके लिए सोनल को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू सोनल विजयवर्गीय। I, Advocate Sonal Vijayvargiya, President of Kota Chapter. Thanks to all of you to join hands with us. Thanks to Dr. Vidyottama Jha, our renowned speaker who took this lecture brilliantly and answered all the questions patiently. I thank our technical support team, Madhura ji, Tanvi ji from ILA. I thank Dr. Rajesh, President Jaipur Chapter, Vaibhav Parikh ji, President Ajmer Chapter, and our first keynote speaker, CJ Johnson sir, who contributed with us some points. And I thanks Rakhi Buddhi Raja ji and Jyoti Gupta ji, who contributed with us with on video. Thank you everyone. हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमें अपेक्षा है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ आगे भी बना रहेगा। अच्छा, एक बार सब लोग वीडियो चालू कर देंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम आपका फोटो भी देख लेंगे, है ना। और डॉक्टर विद्योमा झा को भी भेज देंगे कि उन्होंने इतना बढ़िया स्पीच दिया। तो यदि वीडियो चला सकते हो तो अच्छा लगेगा हमें। माफ कीजिए, आज मेरी वीडियो नहीं चलेगी। आज आपकी वीडियो नहीं चलेगी। जॉसन सर ने उस दिन बहुत कोशिश की, फिर लेकिन इस दुनिया में बेहतरीन लोग हैं। तो हमारे पहले लेक्चर में बनारस से हमारे एक प्रोफेसर आ गए, कुछ और लोग आ गए। मैं उनको सुन पाया था। हाँ, सुन पाए थे आप। चलिए, तो मिलेंगे अगले महीने में फिर। और 1 तारीख को मिलना चाहे तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मेल आ गई है, हमारी टीम आपको भेज देगी। चलिए, once again, thank you so much.